हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। समस्त को स्वागत। रेडी समस्ते? तो स्टार्ट करबा आज सेशन को। वेलकम टू एक्सप्लोरिंग गोल्स। जेमति कि तमे जानिछो, यस, सब क्लासेस पई प्रिपरेशन निजर करि परिबो। लाइव क्लासेस एंड इंपोर्टेंट अपडेटेड वीडियो सब पाई परिबो। वैकेंसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड मोटिवेशन सब जिंस पाई परिबो। लाइक शेयर कमेंट भी करि दियो एंड एक्सप्लोरिंग गोल्स एप्लीकेशन रे जॉइन करि कि तमरो प्रिपरेशन को आहुरी स्टिमुलेट करि परिबो, एक्सेलरेट करि परिबो एंड सियोर सक्सेस जो रास्ता सेटा रे आगु को बढ़ी परिबो। तेणु एथिरे तुम माने जॉइन करिकी डाउट क्लियरिंग सेशन, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल्स, लाइव क्लास जदि लाइव मिस करछो रिकॉर्डेड क्लास, सब स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ आकार रे एंड ई बुक्स ए सब जिंस पाई परिबो। तो फॉर मोर डिटेल्स ए नंबर रे कांटेक्ट करि परिबो। कोर्स अछि बीएड एंट्रेंस पई, ऑल टीईटी एंड टीचिंग एग्जाम्स पई, समिति ओडिशा एजुकेशन सर्विस, एमए पीजीटी एजुकेशन, नेट एजुकेशन, एमएड टीचर एजुकेटर पई कोर्स रही एंड फाउंडेशन कोर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अच्छी। तो ये सेशन रे हमें क्वेश्चन नंबर 16 पर्यंत जाइथिले। टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन, दैट इज 17। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रणाम समस्त को, शुभ संध्या, हरे कृष्णा, वेलकम, नमस्कार, वेलकम एवरीवन, थैंक यू, वेलकम, गुड इवनिंग, प्रणाम। Motivation plays a crucial role in the learning process as it influence the effort and persistence of students puts into learning activities. According to self-determination theory, motivation can be intrinsic or extrinsic. Intrinsic motivation refers to सिद्धेश्वर ऑफलाइन क्लास खोजुछ कि मोर? जदि खोजुछ खोजनी, जेतेबेले आसीबो ऑफलाइन रो सेतेबेले जणैबी। एबे पई किछि नाही। In an activity for its own sake, desire to engage in an activity for its own sake, while extrinsic motivation reward ପାଇଁ किंबा प्रेशर रे। तेणु एठी ए सब जिंस रो क्वेश्चन जदि देखिबा, लास्ट रे पचारुछि कि which of the following teaching process বা practices is most likely to enhance intrinsic motivation in students भितर intrinsic motivation कोटा आनिबो। तो बहुत बढ़िया कहिलो, इंट्रिंसिक मोटिवेशन रो कथा कहूची। तो एक्सटर्नल एनकरेज रो काम नाही। ओके, प्रोवाइडिंग कंस्टेंट टीचर डायरेक्टेड कंट्रोल ओवर ऑल क्लासरूम एक्टिविटीज हबनी। तापरे रोट मेमोराइजेशन ऊपर फोकस करिबा एंड टेस्ट प्रिपरेशन ऊपर फोकस करिबा रेदर दैन एनकरेजिंग स्टूडेंट्स। तो एटा भी हबनी। तो गोटे रहिला सेटिंग चैलेंजेस गोल्स दैट आर अटेनेबल, allowing student to experience a sense of competence and accomplishment। तेणु ऑप्शन बी जो माने करिचो ठीक करिचो, ये होची इंट्रिंसिक मोटिवेशन रो कथा। देखो आराम से धैर्य तो बहुत दरकार अछि। आगु को जो माने अप्लाई करचो ईएमआरएस, अमित रो पीसीएम रे हे जाइछ रे। पिला समस्त को मु कहि दउछ। अमित रो पीसीएम रे सिलेक्शन हेछि डीवी पई। किछि कहू नांती एठी, लुचै के रखुचंती। हां, एटी इन द राइट आंसर होछि using regular quizzes, peer assessment, self assessment, teacher observations to track students progress throughout the year, encouraging learning and improvement in various areas। ओके, ये हला सबु जिंस एटी रहउची। देखो सीसी कोन कहउची, कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो कथा कहउची। कंटीन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव, तेनु फिजिकल इंक्लूड्स देयर फिजिकल, इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव सबु जिंस रहउची।
है यूजिंग रेगुलर क्विजेस पीयर असेसमेंट सेल्फ असेसमेंट ए सब जिन रहा चलो the concept of individual differences emphasizes that every child has a unique pattern of growth and learning. Teachers should recognize these differences and provide dash to meet the diverse needs of students. Concept of individual differences. Differentiated instructions is the right answer. बहुत बढ़िया कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस पाई कौन करिबा आउ इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान करिबा बहुत बढ़िया आईईपी करिबा नहीं झरणा आईईपी करिबा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान हाँ एते कंग्रेचुलेशंस कोनी या पर पुणी तांकर डीवी अछि एंड समस्त एक्सपेक्ट करिबा कि तांकर सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट भी रहू बहुत पिला हमर सिलेक्ट हेचंती बहुत पिलांकर मेसेजेस आछि से समस्त को कंग्रेचुलेशंस किंतु आ गोटे स्टेप जस्ट बाकी अछि जोटा हला सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन मु भाबुछि जे समस्तंकर स्मूथली जीवो तो फाइनल मेरिट लिस्ट रे हमें पुणी एक्सप्लोरिंग गोल्स गदिया दलर हाँ पीसीएम रे राजनीति देखिबा ठीक ठीक सेमती आम आग को सीबीजेड रिजल्ट पचारुले बहुत पिला आसो कहीं व्यस्त कहीं पढ़ धैर्यर सहित बेसी क्वेश्चन करवानी अल्प करवा किंतु सबुतक भल मन ध्यान देकी कर यस ज्योतिर्मय emotions are closely linked to cognitive processes involved in learning. When children are emotionally engaged, their cognitive abilities such as memory, attention, decision making are significantly influenced. For instance, when a child is anxious, they may have difficulty concentrating and remembering information, while feeling of excitement or curiosity can enhance engagement and a learning outcome. Understanding the interplay between emotion and cognition can help teachers create more effective learning environment. Which of the following action is most likely to help teacher manage the emotional state of students in order to optimize their cognitive performance? ତେଣୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଇମୋସନ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିକି କଗ୍ନିଟିଭ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ କରିପାରିବା ignoring emotional needs तो होनी giving students extra work and tasks to keep them busy and distract from negative emotion एटा भी ठीक नुह कि केवल busy करदेले हे जीवो punishing students for expressing strong emotion भी भूल using methods such as mindfulness relaxation techniques providing a safe space for emotional expression to help students regulate their emotions thereby enhancing their cognitive performance B is correct ये टाइप रो क्वेश्चन रो दम न थाए मन रखि थाओ ये केवल पेशेंस टेस्ट करबा पई परीक्षा रे आसे पर्टिकुलरली सेंट्रल स्कूल परीक्षा गुडा करे एटा ए टाइप रो क्वेश्चन बेसी देखिबा को मिले सीटीईटी एग्जामिनेशन रे ए टाइप रो क्वेश्चन बेसी देखिबा को मिले सेमिति सेंट्रल बीएड रे ए टाइप रो क्वेश्चन अधिका देखिबा को मिले सो दीज आर दे आर पावरलेस ए क्वेश्चन रो दम ही नहीं ये केवल धड़ी 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 हे कि आसीबो कह बाबू दम अच्छी तो मत पढ़ी देखा आ मो भाया क्वेश्चन 5टा कि 10टा करू करू तो टाइम तक पलैब एति जानी था तो टाइम मैनेजमेंट पेशेंस दीटा जिन टेस्ट करने को टाइप क्वेश्चन आसे ये क्वेश्चन रियल दम न थाए 21 children with autism spectrum disorder exhibit a range of behaviors may include difficulty with communication, social interaction, repetition pattern of behavior. These children may also have varying level of intellectual functioning,
from highly gifted to intellectual disability. The teacher's role is crucial to provide structured, supportive environment, tailoring the learning experience of to meet the child's unique needs. Which of the following strategies is most effective for support of child with autism in the mainstream classroom? ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଏତିକିଟା ହଉଛି actually question ଟା. Which of the following strategy is most effective for supporting or to support a child with autism in a mainstream classroom? ଏତିକି ହଉଛି question. ତା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଲେଖିଛି ଅଟିଜମ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଡିସଅର୍ଡରକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଛି, ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିଛି, ବାସ୍ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି using visual schedules, providing clear and consistent instruction, offering breaks to manage sensory overload. Overload ଯଦି ଅଛି ତାକୁ manage କରିବା ପାଇଁ break ବି ଦେବା. Providing additional assignments to keep the child occupied while other children engage in group activities. ତ ଏଠି ତମେ ଚାଇଲ୍ଡ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିଦେଲ, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କଲ, ଏ ପ୍ରକାରର ଏମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଟ୍ରିଟ୍ କଲ, ତେଣୁ ଅଲଗା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଯୋଉମାନେ ଡି କଲ ସେମାନେ ଭୁଲ କଲ, ଡି ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଓକେ, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସେଇଟା କରିବ ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିବ କଣ ପଜିଟିଭ, ତାକୁ ହିଁ ଆନ୍ସର କରିବ। Howard Gardner's theory of multiple intelligence emphasizes that individuals have different kinds of intelligence, such as linguistic, logical, mathematical, musical, interpersonal. A teacher who applies this theory in the classroom would बहुत simple question. Yes, incorporate diverse activities like storytelling, experiments, group discussion, music. जेहेतु विभिन्न प्रकार इंटेलिजेंस अच्छी, मल्टीपल इंटेलिजेंस कथा कहले हावर्ड गार्डनर, तेणु मल्टीपल वेज ऑफ टीचिंग लर्निंग करबा, तेणु डिफरेंट पिला जार जो प्रकार इंटेलिजेंस को सेही प्रकार मेथड का काम रे आसियो। का बर्थडे बी.Ed तो एटा भी ताले बी हबो, तो देखि कल which of the following practices aligns with the constructivist approach to teaching and learning? Conducting rote memorization, encouraging learners to engage in group discussion to build new knowledge, providing learners with the correct answer and expecting them to memorize correct answer कहि दियो तांको घोषै दियो, use fixed worksheet without considering individual difference, तेणु गोटे ही तो अछि भी। हे प्रभु, या परटा कम से कम बी न हो प्रभु, लज्जा हे गला पूरा। During the annual examination, a teacher creates a comprehensive question paper designed to evaluate students' overall understanding of all topics taught during the year. The scores are then used to rank students and report their academic achievement to parents. Which type of assessment does this best represent? रुचिस्मिता सतरे, गौरव सत, हे भगवान, पुणी भी के यस एनुअल एग्जामिनेशन कथा कहला, स्कोर्स रो कथा कहला, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रो कथा कहला, इवैल्यूएशन रो कथा कहला, एकेडमिक अचीवमेंट रो कथा कहला, तेणु निश्चित रूपे ऑफ लर्निंग बा समेटिव असेसमेंट हबो। एटा समेटिव तो बुझलो, ऑफ लर्निंग एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जोठी रैंक पाइबा, मार्क पाइबा, स्कोर पाइबा, परसेंटेज पाइबा, इवैल्यूएशन हबो, एनुअल एग्जामिनेशन, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, एकेडमिक अचीवमेंट सब जणा पड़ियो। हो पुणी भी कि जा हबो मु छाड़ी देली।
A classroom has students from diverse cultural backgrounds and varying abilities, including a child with a hearing impairment. The teacher ensures that all students have equal access to learning by using visual aids, providing a sign language interpreter, and promoting peer collaboration. What principle of inclusive education is being demonstrated in this scenario? ମାନେ କ'ଣ କହିଛି ଡାଇଭର୍ସ କଲଚରାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅଛନ୍ତି including child with hearing impairment ଶୁଣା ଯାଉନି teacher ensures all students have equal access to learning by visual aids providing a sign language ଶୁଣା ଯାଉନି ତ sign language ବି କାମ ଦବ ତେଣୁ ensuring equal opportunities for all learners by addressing their diverse need ତାଙ୍କ need ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଇଡ୍ କରିବା ହଁ ରୁଚି ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ନା କ'ଣ सी हब तो ना बी हब फोकसिंग ऑन नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिजेबिलिटीज ओनली कही दी ना रक्षा है A teacher gives her students the following activities in a science class. You are living in a village that has a severe water shortage. As a community leader, you must come up with two innovative solutions to save water. Discuss the pros and cons of each solution and explain how you would convince others in the village to implement your idea. What critical thinking skill are the activity designed to develop among students? सत्तर ना कौन memorization रे तो एठी नहीं writing skills summarizing text content collaboration skill without focusing on independent thinking सेमती भी नहीं ability to analyze problem evaluate and justify decision B is the right answer. Okay. In a social studies class, a teacher presents two contrasting opinions on the use of technology in education. Students are asked to identify arrangements in favor of and against the use of technology, evaluate the validity of the evidence supporting each argument, conclude which opinion they agree with, and justify their choice. What aspect of critical thinking is being emphasized through this class? पैसिव लिसनिंग एटी नहीं कहीं आइडेंटिफाई करो आर्ग्यू करो इवालुएट करो कंक्लूड करो ओपिनियन दियो जस्टिफाई करो तो पिला को पूरा एंगेज करिसंदी अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग टीचर्स व्यू पॉइंट एटी नहीं डेवलपिंग रीजनिंग स्किल्स बाय एनालाइजिंग आर्गुमेंट्स एंड फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंक्लूजन तेणु एठी सी हबो राइट आंसर मेमोराइजिंग एटा नुह सी ही हबो राइट आंसर कहीं एटी स्टूडेंट को पूरा एंगेज करा गला स्टूडेंट को कहला आइडेंटिफाई आर्गुमेंट्स फेवर रे अगेंस्ट रे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इवालुएट एविडेंट आर्ग्यू कनक्लूड जस्टिफाई ये सब जिन रहा स्टूडेंट व्यू पॉइंट इंपोर्टेंस दिया गला स्टूडेंट्स को स्टूडेंट भीतर रीजनिंग स्किल डेवलप करा आर्ग्यूमेंट एनालाइज इंडिपेंडेंट कौन व्यू पॉइंट इंडिपेंडेंट व्यू दवा इंपोर्टेंस दिया गला टीचर व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने कथा ये नहीं ओके A teacher adopts a project based learning approach in her classroom. She assigns a project where students investigate how waste is managed in their neighborhood. Waste को केमती मैनेज करा जाउछ हाँ छुआ को काम दिया गला प्रोजेक्ट दिया गला they are required to collect data interview residents analyze the information and present their findings through charts and a group presentation. How does this activity align with the principle of progressive education? एटा केमिति progressive education सहित related तांको गोटे टास्क दिया गला प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग अप्रोच दिया गला कि केमिति से माने नाइबरहुड रे तांकर मैनेज करूछंती कोन वेस्ट को
Yes, it is the rote memorization, घोषा घोषी strict discipline किछि नाही. एठी इंडिविजुअल वर्क भी नुह, एटा ग्रुप वर्क कथा कुआ जाइछि प्रोजेक्ट जेहेतु. एठी एंटायरली ऑन टीचर डायरेक्टेड कहूछि एंड लिटिल स्टूडेंट ऑटोनॉमी कहूछि नाही. तेणु ये भी emphasize, ये भी emphasizes student centered experimental learning by engaging students in real world problem solving, right? करो निजे पढ़ी कलो एटा. Binte Hawa, yes, it is beneficial for B.Ed entrance as well. नाम एटा भी भूल को तो. A teacher wants her students to understand how plants grow instead of just lecturing. भाषण न मारी की छुआ को कुआ गला ग्रुप रे तुमको डिवाइड कर दिया गला. प्रति ग्रुप गोटे गोटे प्लांट रो सीड नेलो, वाटर सबुदिन देलो एंड ऑब्जर्व करलो ग्रोथ ऑफ फॉर ओवर 2 weeks, 2 सप्ताह पर्यंत से प्लांट रो सीड केमती ग्रो करछि ताको ऑब्जर्व करलो. The teacher also asks the student to discuss how factors like sunlight, water influence growth. Which learning theory best reflects the approach? Behaviorist no cognitive theory हबनी कहीं memorization कहिछि. Students are rewarded based on एटा भी limitation है गला. Social learning theory एटा नुह कहीं ना एठी कहिछि पुनी students passively observe हबनी. तेणु गोटे जिंस option B. Constructivist theory, as students actively construct their knowledge by experiencing and observing the plant growth process. Very good, बहुत बढ़िया. बढ़िया पार्टिसिपेशन. परीक्षा आगु को अच्छी बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा गुड़िया अच्छी. मैं बारंबार कहूँ. A teacher noticed that her students often struggle to understand abstract concepts like force and motion in physics. She decided to conduct experiments using a toy car, a ramp, and different surfaces, smooth and rough, to demonstrate how friction affects motion. She encourages students to observe, ask questions, and record their findings. ये को टाइप रो अप्रोच इल्युस्ट्रेट हाउ स्टूडेंट्स लर्न. स्टूडेंट्स केमती लर्न करंती. तो एठी निश्चित रूपे ए हबो स्टूडेंट्स लर्न बेटर when complex concepts are taught using a real life hands on activities. एक्टिविटीज माध्यम रे और रियल लाइफ रो एग्जांपल देकी जति भी कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट को पढ़ा जाए सेते बेले छुआ माने बेटर सिखी पारंती. एटा ही ठीक हबो काहे कि एब्स्ट्रैक्ट कांसेप्ट शुड बी टॉट थ्रू लेक्चर्स. पूरा भूल. लर्निंग इज ओनली इफेक्टिव व्हेन स्टूडेंट्स मेमोराइज. पूरा भूल. ऑल स्टूडेंट्स लर्न एट द सेम पेस. पूरा भूल है ना. नहीं तो ए हबो राइट आंसर. In a progressive classroom, a teacher encourages students to explore topics of their interest within a broader theme of environmental sustainability. Students work in groups to create projects such as designing eco-friendly products, creating awareness campaigns, planting trees. The teacher provides guidance when needed, but allows students to take the lead. तेणु students को पूरा independence दउछन्ति. केवल facilitate करूछन्ति when needed. Principle of progressive education reflected in this approach. Teacher-centered instruction, emphasizing on standardized teaching, encouraging students autonomy, creativity, collaborative learning. तो clearly see हबो. असुविधा किछि अछि कहीं ना एटा भी हबनी. रिजिड एडहेरेंस विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी. तो नेगेटिव जहाँ ताको काढ़ी की फोपाड़ो कहीं ना एटी प्रोग्रेसिव क्लासरूम रो ऊपर क्वेश्चन आछि. प्रोग्रेसिव एजुकेशन सब बेले पॉजिटिव.
तेणु पॉजिटिव ऑप्शन जीए ता सहित जीवा ठीक ना आ पढ़ापढ़ी केमती चलछि और नहीं तो ठीक अछि वर्ण वैशाखी थैंक यू मिथुन वेरी गुड एमडी एकदम फर्स्ट क्लास गायत्री थैंक यू बिंटे हवा वेयर यू फ्रॉम बिंटे A teacher designs an activity where students work in groups to create a model demonstrating the water cycle. So the teacher is demonstrating water cycle, right? Acha. After the activity, students are asked to evaluate their peers model based on criteria like creativity, accuracy, presentation. They also reflect on what they learned during the activity. What type of assessment does this represent? Who type of activity could represent coach? Ladakh, Jammu, Kashmir, thank you for joining. Exploring goals. Thank you. That what you mentioned is really inspiring. That the questions are good and quality questions are there. So thank you for that. Thank you for your feedback. Although you are not understanding the language, still you are watching. That's a great pleasure for all of us who are from Odisha. Assessment of learning. As students evaluate each other's work. Assessment for learning. As teacher uses the activity to judge understanding. So the most important is assessment as learning, as student actively engage in peer assessment and self assessment. जेहेतु निजको assess करूची छुआ, self assessment करूची, peer assessment छुआ छुआ को assess करूची. Okay, right? So a teacher designs an activity where students work in groups to create a model demonstration. माने केते creatively काम करूछंती, peers collaboratively work करूछंती. So there is collaboration, there is group activity, there is project method. So it is encouraging creativity, accuracy, presentation, everything. So it is assessment as learning because it encourages and engages the students to assess their friends and also to assess themselves, right? So that's it, my dear friends, in this session. ମୁଁ expect କରିବି that ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବ ଏକ୍ସାମିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସାମିନେସନ ସବୁ ଆସୁଛି ଅଲ୍ ଦ ଟିଚିଂ ଏକ୍ସାମ୍ସ ଆର୍ କମିଂ EMRS ଇଜ୍ କମିଂ ୟୋର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର RHT SSB TGT ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ତ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବା କି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଚାଲିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଡୋଣ୍ଟ ଓରି CTT OSS TET and OTT fresh OTT are coming. So relax ro December ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସୁଛି 2025 will be the year of success. Don't worry, relax. Easy is always for you. Exploring goals रे যদি ନୂଆ ଅଛ subscribe କରିକି bell icon hit କରିବାକୁ ଭୁଲିବନି and like share ତ କରି ହିଁ ଦବ. Thank you very much my dear friends for your active participation, active engagement. Many thanks. Stay connected with Exploring Goals. पुणी देखावा आगामी अध्याय रे भयंकर प्रश्नमानकर समाहार को नहीं कि निजर क्रिएटिविटी एनालिटिकल स्किल और सेल्फ कॉन्फिडेंस को एनहांस करके एग्जामिनेशन पाई निजको फिट घोषणा करबा पाई आउ एक चमत्कार हाँ सेशन भयंकर सेशन. धन्यवाद. जय जगन्नाथ.